So Porsche, Uber, PVR, Sure. Volvo, right? So how did you get like Porsche and all of these? तो जब आप एक co-founder लाते हो कंपनी में तो क्या चीजें देखते हो? जो जर्नी पे मैं हूं ना, इट गिव्स मी लाइक अ लॉट ऑफ कंफर्ट कि दैट इज अचीवेबल, राइट? सो सलील हैड दिस क्वेश्चन, सो पीयूष भाई का ना चाइल्डहुड पूछना कैसा है। मैंने कहा यार ये क्या है, फिर बोलते हैं नहीं नहीं, जब वो एजेंसी बना रहे होंगे ना, वो बहुत कुछ चाइल्डहुड से एसोसिएटेड होंगे। सो इज दैट सो, लाइक हैज दैट हैपेंड? मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा रहा हम्म है। आई वाज इन अ मिडिल क्लास फैमिली, तो कभी ज्यादा भी नहीं था, कभी कम भी नहीं था। मैंने पूरी रिसर्च की है, ठीक है पीयूष भाई। तो हाँ, मैं पूरे लिंक्डइन पे जाके आपका सोशल प्रोफाइलिंग आपको स्टॉक किया प्रॉपर, ठीक है। So, जो सेम प्रिंसिपल मैं बिजनेस में लगाता हूँ, मैंने वो सिमिलर प्रिंसिपल शादी में भी लगाया। But you still have like life at peace, right? Piyush bhai, since you are from video background, right? Like you do, like you started with video, right? How do you feel the quality of the podcast is? Because this is our first podcast. हमने ना इसका नाम रखा है, and you were so kind enough to come up as like the first guest, right? Why? Yeah, so I always shy away from doing these things. But as we are growing, मेरे को realize हुआ कि Hmm. थोड़ा लोगों के सामने आना पड़ेगा. You need to talk about what you're doing. तो इसीलिए उसको नहीं करते Hmm. हैं. और लास्ट टाइम आप लोगों से बात करके काफी पर मजा आया एक था, बात बताओ, क्या ये पॉडकास्ट तो मेरे आपके को लिए लगा लॉन्च इट्स बी पैड फन. टाइप का है? मजे ले रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. बट हाँ, मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? लाइक सिंस आपने 5 साल स्पेंड किया है एजेंसी में, राइट? एंड आई विल गिव लाइक अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन एट वन पॉइंट इन टाइम, बट हाँ. आई जस्ट फील दैट after a point in time you have to do या PR activities, and I think you guys are like really solid on that, right? You like do like solid articles and all of that, and it naturally sort of या comes up on the feed and we are like यार बढ़िया, right? I didn't sort of follow you on LinkedIn पहले, but once I started to do that, right, मेरे को समझ में आया कि how important is this stuff, right? And I know a lot of people from my circle, right, who have या commented on your LinkedIn post. सिर्फ रिएक्शन नहीं, commented. So how do you hack that? Like एक मतलब initially, ओके. right? Like first question is कि आप जब कंटेंट लिखते हो, राइट, हाउ डू यू मेक द कंटेंट टू एंगेजिंग ऑन लिंक्डइन? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ ग्रैब ऑल द अटेंशन? तो हम्म सागर भाई, मैंने ना बहुत हम्म फ्रेमवर्क्स वगैरह पढ़े हैं, इसको कैसे हम्म किया जाता है, बट आई कुड नॉट रिलेट टू एनी. So most of my LinkedIn posts are हम्म basically reflections from my 5 year journey. तो वो रिफ्लेक्शन के टाइम पे मेरे को कुछ लगता है कि दैट दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग एंड शुड बी शेयर्ड विद हम्म पीपल हु आर स्टार्टिंग अप और स्टार्टिंग देयर एजेंसी. तो फिर उसके अराउंड मैं हम्म अपना पूरा एक्सपीरियंस कैप्चर करके वो लिखता हूँ बस. कोई हम्म फ्रेमवर्क या कुछ मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ एंगेजमेंट है भी नहीं. बट या हाँ, कुछ लोग हैं जो या जिनको बट हाँ, वैल्यूबल मतलब लगता है तो जनरली वो कुछ फ्रेमवर्क नहीं होता, राइट? लिंक्डइन में जो पढ़ते हैं. मतलब आई वुड से कि जैसे पहला हुक होना चाहिए, ये वो मतलब आई हाँ. डोंट थिंक इट मैटर्स, राइट? या हाँ, ये सब मैंने पढ़ा है, बट आई हम्म डोंट थिंक राइट मैटर. मैं रिलेट भी नहीं कर पाता इससे. मतलब इट्स हम्म नॉट नॉट राइट पोस्टिंग कि ये इसको 1000 लाइक मिले या कुछ, बट द आइडिया इज कि राइट। और मतलब 10 आप लोग ऐसा नहीं जो लिखते इससे ना कि वैल्यू मतलब कुछ पहले एक निकाल. हुक लिखो, सो यू लाइक कि यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, राइट? फिर आप धीरे धीरे स्टोरी लिख रहे हो, राइट? उससे मतलब यू बिकम लाइक अ टीवी सीरियल, राइट, रादर देन अ लिंक्डइन पोस्ट। तो आई आल्सो फील दैट यू शुड लाइक जेन्युइनली या शेयर व्हाट यू हैव। और मतलब एक ये बुक भी थी, शो योर वर्क, राइट? इट वाज लाइक अ वेरी मिनी स्मॉल बुक, एंड इट गिव्स यू लाइक मेजर कंफर्मेशन बायस, राइट? या कि या यार जो तुम कर रहे हो ना सही है, मतलब प्रोसेस में जो भी तुमको लग रहा है कंटेंट है वो लिख दो, राइट? इट विल हेल्प समवेयर, राइट, एटलीस्ट। क्योंकि वी आर एट द स्टेज वेयर वी आर अ लिटिल बिट अहेड। हमेशा हम किसी से आगे रहेंगे और किसी से पीछे रहेंगे, राइट? तो हमेशा हमारा कंटेंट किसी ना किसी को तो हेल्प करता ही है, राइट? इवन इफ वी आर इन आवर ओन एग्जैक्टली. बबल ऑफ कि इट डजंट हेल्प। सो एट दिस पॉइंट, राइट, आई हाँ. वुड लाइक टू गिव लाइक अ फॉर्मल इंट्रो, ठीक है, इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, राइट? So Piyush was kind enough to help us like with our journey, and I think he came in between when we were struggling with a lot of things, and we were sort of just ideating कि हमको अपनी agency को कैसे, how do we sort of look at our agency, right? And Piyush came in at that point and he gave us like a lot of confirmation bias. So for me, Piyush has never been the right person who can show me the right path, because he's on the same path, right? And काफी चीजें जो वो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, but jokes aside, right, like he has achieved a lot in the last 1 year. I think your revenues have doubled, you have acquired like couple of agencies, right? And to envision you at a place, it gives me like, it feels warm that जो journey पे मैं हूँ ना, it gives me like a lot of comfort कि that is achievable, right?
And since you've got like clients like Porsche, Uber, right, PVR, मैंने पूरी रिसर्च की है, ठीक है पीयूष भाई। तो हाँ, मैं पूरा लिंक्डइन पे जाके आपका सोशल प्रोफाइलिंग आपको स्टॉक किया प्रॉपर, ठीक है। So how did you get like Porsche and all of these names, right? Like so like a lot of times, right, we look at videos and we are like यार एक कुछ तो होता होगा framework, right, to achieve to get these companies. But last time आप जो बता रहे थे, I would like you to Hmm. repeat that so that you know people know how did you get those clients, right, at the first place. And I would name the clients, right, Sure. like going ahead. So Porsche, Uber, PVR, Sure. Volvo, right? These Yeah. were the four names, and there was like a twin tower as well, right? Trump towers, right? So that was also one big Trump client. ties, So yes. how did you go about how Hmm. did that happen? So जैसे last time मैंने बताया था, अगर we got Hmm. lucky at different intervals in our journey. So earlier we were a small agency, restaurants वगैरह के लिए branding, social media marketing करते थे. तो उसी में एक रेस्टोरेंट था जिसका हमने ब्रांडिंग मार्केटिंग किया एंड इट बिकेम वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट्स इन गुड़गांव. सो लॉट ऑफ who's and who's used to go there. फिर क्या हुआ, ऑडी का Hmm. जो मार्केटिंग मैनेजर है, ही वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर एट दैट bar. It was called Molecule. And he Hmm. noticed our posts, he saw our work, and he was very impressed. And he asked the manager there, ki, bhai, who's doing your marketing? So he said, there's a small agency called Blue Vector, and they do it. So he met with us and बोला कि यार हम ऑडी, पोर्शा और Hmm. आइजेनिका, इनके तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे. दे हैड ऑडी गुड़गांव, दिल्ली, पोर्शा नॉर्थ, एंड दे हैड सम स्टोर्स Hmm. फॉर एप्पल एज वेल. Like we are looking for an agency for it. So he said, no, we are not the right one for you because we just go, we're small and we work with small brands, etc. So no, I've seen your work and I see there is Hmm. potential. So I would like you guys to come and pitch. I still said, no, okay, you're saying, I mean, thanks for that, but I don't think we have the Huh. capabilities to do this. But he insisted. लेकिन ये तुम लोग पिच तो करो, फिर देख लेंगे. फिर लगी चलो यार, इतना बोल रहा है बंदा, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, थोड़ा हम भी दिखा लेते अपने में और पिच करते हैं. तो हमने काम करना शुरू किया, पिच बनाया. उस समय तक हमें हमारे में वीडियो कैपेबिलिटीज नहीं थी और पिच का एक मैंडेट था कि हम वीडियो बना के प्रेजेंट करें. तो वही 2-3 दिन में जो श्रेय, रिजू, जो को टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला कि हम कर लेंगे. कैसे कर लोगे? तो यूट्यूब से सीख लेंगे. ठीक है. 2-3 दिन में यूट्यूब से देखा, वीडियो भी Hmm. तैयार किया, पिच भी तैयार किया और जाके पिच किया. एंड Right. वी रियलाइज दैट वी वर बेटर Right. देन मोस्ट ऑफ द अदर Right. agencies who had pitched, and we got the mandate. It तो played वही है out कि well. it was a Yeah. stroke of luck, but जब opportunity आई, then we Mm-hmm. put in, Yeah. then we put in Also, all the, the hard the work, fascinating and we part is made it कि happen. I wouldn't say no at all. ठीक है. Like I am the kind of guy who will be like यार ले लो, चलो देख लेंगे, ठीक है. But what made you to say no? Like at that point in time when sort of Porsche is sort of approaching you, right? Like a lot of agency owners or a lot of people who would be in like a similar industry wouldn't say no to this kind of an opportunity, right? I think your work peaked and then your work was so good कि उसके बाद भी आपने no कहा, right? So मतलब why would you say that? तो यार उसके Hmm. पहले ना, हमने ऑटोमोबाइल क्या किसी और इंडस्ट्री में ज्यादा काम ही नहीं किया था. वी वर ओनली डूइंग F&B एंड उसी में हम फेमस थे. तो अब ऑटोमोबाइल में भी जब आता है तो आपको लगता है कि आप थोड़े नॉर्मल ब्रांड से शुरू करो. अब स्टार्ट में ही अगर ऑडी और पोर्शा आ जाए आपके पास, तो आपको लगे कि Right. यार मतलब कैसे मैनेज करोगे, 10 लोग की टीम है आपकी Right. और उसमें सारे इनएक्सपीरियंस, सारे फ्रेशर. तो मतलब वो Right. Right. अंदर से But पता होता है कि like कैसे yeah. करोगे. एंड और मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं कुछ भी, कोई भी Hmm. अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो मेरे को यस बोलने में थोड़ा टाइम लगता है. मतलब माय इंस्टेंट Hmm. रिस्पांस इज कि यार मतलब Hmm. इफ यू आर नॉट द राइट Right. फिट, आई टेल द क्लाइंट्स Right. की And that's आई very डोंट थिंक honest. यू आर द Matlab, I राइट think फिट that's फॉर very यू. people appreciate that. Matlab, if you say no more than yes, right? People would appreciate for a particular thing. So, in the domain you are, right? We are very shitty at that, right? We do not do videos. तो पर हमने क्या किया था पहले starting में for sustainability and getting some bucks in, right? We said कि यार करते हैं, and we ended up sort of refunding like a little bit amount. उसके बाद हमको मतलब वीडियो प्रोजेक्ट्स आने लगे एंड वन ऑफ आवर क्लाइंट इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्क वी डू राइट इन dev and design, right? She came up to us and asked that would you handle like animation for us as well, right? So we told her on her face कि यार we are very shitty at it, right? उसके बाद she told us, I would want to invest in your company. So that card of not not being able to pull off worked for us, right? And I've seen कि यार most often than not we are not if people start getting honest, right?
then there is a lot of money to be made in this particular field, right? And as we were speaking, right, कि मतलब services are just incrementally stacking Yeah. up client on client, and then once एक बार हो जाता है तो then it starts like a एक snowball effect start हो जाता है, right? And I think it's a good business for everyone to sort of make money, right? It's a very sort of collaborative space, you know, where a lot of people Yeah. can come in, right? But apart from that, right, we know that you are in Goa right now, Yeah. right? How did that shift happen? और जो लोग ऐसे फैंसी विजुलाइज करते हैं ना कि आप गोवा में बीच की तरफ भाग रहे होगे, पानी में डुबके मार रहे होगे, Hmm. उससे कितना लगे? यार एक तो लोगों को हाँ लगता है कि आप हाँ गोवा में काम करो तो आप दिन भर बीच पे बैठ हाँ, के काम करते हो। यहाँ भी वो राइट। नॉर्मल घर है मतलब नॉर्मल अपार्टमेंट में नॉर्मल ऑफिस में ही काम करते हैं। बट हम्म हाँ, यहाँ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेफिनेटली बेटर। हम्म तो मैं पिछले 5-6 साल से गुड़गांव में था। एंड गुड़गांव यू नो हैज एक्सट्रीम वेदर्स, ऑल्दो इट्स अ ग्रेट सिटी, बट एक्सट्रीम वेदर्स एंड व्हेन द पोल्यूशन गेट्स हम्म टू इट्स पीक, तो आपको राइट लगता है क्या मतलब ये बेसिक्स राइट। हैं, क्या कर रहा हूँ गुड़गांव में। तो वही पैंडेमिक के टाइम हम्म 1.5 years वी वर ऑल वर्किंग रिमोट एंड वर्क वाज हैपनिंग वेल। अर्लियर वो हम्म एक थॉट प्रोसेस था कि नहीं ऑफिस में ही काम होता है, जब सब साथ में आते हैं तभी हम्म काम होता है। वो 1-1.5 साल में समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 साल से काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हम्म सो वी थॉट कि यार फिर गुड़गांव में रह के क्या मतलब, कहीं से भी काम कर हम्म सकते हैं। तो पहले हमने मनाली सोचा, हाँ क्योंकि वी स्टार्टेड आवर थॉट प्रोसेस हाँ ड्यूरिंग मई जून, सो वी थॉट लेट्स गो टू मनाली। बट फिर रियलाइज हुआ कि मनाली विल बिकम कोल्ड नवंबर दिसंबर, और हम्म। उस टाइम पे फिर हमें शायद रीलोकेट करना पड़े। और उस टाइम में हमने अच्छा, सोचा फिर तब गोवा चल जाएंगे, तो पहले मनाली फिर गोवा। राइट, बट फिर शिफ्टिंग वो हो जाती डिसाइड है किया कि चलो काफी यार आपकी। एक बार में गोवा ही चलते हैं। तीन, हम्म हाँ, फिर 3 months के लिए आए थे एज एन एक्सपेरिमेंट, या एंड देन रियलाइज कि सही है, राइट। और क्या क्या वी कैन करते हो स्टे गोवा हियर में भाई, बताओ फॉर ना। बिट लॉन्गर। अपार्ट फ्रॉम वर्क, राइट। ये नॉर्मली ही है, मतलब हम्म 5-6 days तो कुछ और करने को ज्यादा होता नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि जब आपके पास कुछ करने को होता है तब राइट। आपके पास बहुत ऑप्शन। हम्म मतलब आप साउथ गोवा जा सकते हो इफ एंजॉय नेचर, हम्म बीचेस आर प्रिस्टीन, बहुत ही सुंदर है। जस्ट राइट। ड्राइविंग डाउन टू साउथ गोवा इज ब्यूटीफुल। फिर अगर आपको पार्टी करना है, इफ हम्म। यू वांट गुड फूड, तो गोवा हैज मल्टीपल ऑप्शंस। Otherwise, you can या just go to the nearby would beach that and just option spend also an work hour for like and come back a solo refreshed. this thing, मतलब जो बंदा जॉब कर रहा है and just wants to sort of go out of मतलब work out of Goa, मतलब I've seen like a lot of people working from Goa because I used to shift places, जैसे मैं मनाली जाता था, I have spent like a lot of time in McLeodganj, right? I spent like a lot of time in Manali working, just Hmm. working, right? 14-15 Hmm. दिन अपना लैपटॉप लेके स्टार्ट करो, बट वहां पे ना, लाइक इफ यू डू Yeah. नॉट गो विद द माइंडसेट Hmm. ऑफ कि आपको रहना है, तो आप उस टाइम फ्रेम में फिर आपको लग जाता है कि अब जितने मजे करने ना कर लो, राइट? तो यू वुड हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दैट माइंडसेट, राइट? सो एक टच पॉइंट Hmm. आता है जब Hmm. आपने डिसाइड कर लिया होता है कि जाना तो है, Yeah. राइट? बट व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्लो, क्योंकि आप इतने हेक्टिक एनवायरनमेंट से आते हो, राइट? आपको वैसा नहीं लगता कि यार कुछ मिस आउट कर रहा हूँ मैं। वो फीलिंग मेरे को हमेशा सिटी ले आती है वापस। Hmm. ऐसा नहीं लगता? Hmm. Hmm. ये लगता है, और हम्म ये आई थिंक आपके पर्सनालिटी पे काफी डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो हम्म केओस और वो जो फास्ट लाइफ है वो एंजॉय करते हो, हम्म तो हम्म फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा गोवा या मनाली में रहना। हम्म हम्म बट आई पर्सनली कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन आसनसोल, तो लाइफ का हम्म पहला 20 साल 18 साल उधर ही निकला है। एंड वेस्ट बंगाल में तो वैसे ही चीजें स्लो होती हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे को लगा दैट आई एम हम्म मोर एट पीस हियर देन व्हाट आई वाज इन गुड़गांव। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, बट टू योर अर्लियर पॉइंट, मेरे को भी हम्म ये लगता है कि जितने भी सोलोप्रेन्योर्स हैं या पीपल हु आर वर्किंग हम्म इंडिपेंडली, वो गोवा शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? मतलब या गोवा या कोई हम्म और टीयर टू अच्छी सिटी लाइक पुणे और या somewhere in the hills. तो आई एक्चुअली द क्वेश्चन चॉइस ऑफ बीइंग कि इन ये क्यों सिटी नहीं शिफ्ट इज कर रहे, मतलब ऑलमोस्ट व्हाई आर दे लाइक स्टिल यू इन नो, दिस मतलब आप सिटी? थोड़ा दिमाग चलाओ जोग्राफिकली, राइट? लाइक द लाइफस्टाइल इम्प्रूव्स, चीजें इतनी सस्ती है, राइट? यू वुड सॉर्ट ऑफ गेट टू enjoy soulless, right? After 7 p.m. the work would actually stop, right? बिकॉज मेरा 6 बजे तक खत्म हो जाता था काम, राइट? आई डोंट नो इफ आई वाज वर्किंग क्लास और वो वहां पे नेचर था, बट 6 बजे तक हो जाता था, ठीक है? कैसे भी यूज्ड टू गो, सो व्हेन आई वाज इन मैक्लॉडगंज, राइट, स्पेसिफिकली, तो हम लोग 6 बजे निकलते थे। ऐसे एक ट्रेल था छोटा सा, ठीक है? रात में उस पे जाते थे, यूज्ड टू कम बैक, इट वाज लाइक 1 hour, बीच में मोमोज की एक रेडी लगी होती थी, वहां पे खाते थे, और हम लोग बस पहाड़ पे बैठ जाते थे। और भाई हम घड़ी देखते थे, टाइम सिर्फ 8:30 हो रहा है, राइट? लाइक इतना धीरे निकलता है वहां पे टाइम, इतना धीरे निकलता है। एंड
almost every day is like a Sunday, right? बिल्कुल. Like every day you would wake up fresh. और अभी मतलब since you we are also speaking, right, कि agency का, हमारी Yeah. agency का, for especially versatile, right, we have rebranded Hmm. growth but to versatile, by the way. There's like Hmm. a change, ठीक. अच्छा ऐसा लग रहा है आपको? हाँ. Good So choice. you like the name, or how's it? Okay. Uh, Okay. So when we're yeah, shifting to I like the this, name. right, तो मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं क्या बोल रहा था यार, मैं वर्सेटाइल वाले थॉट में घुस गया. क्या बोल रहा था मैं? हाँ Hmm. हाँ, मैक्लॉडगंज में थे तो 8:30 तक होता था, जो एंड वी यूज्ड टू मैक्लॉयडगंज में फील थे. लाइक कि यार हम ब्रेक लेके उठ रहे हैं, Hmm. राइट. बट Hmm. आपको ऐसा Hmm. लगता है मतलब गोवा में कि आप रोज रिफ्रेश उठते हो, या फिर आपका पूरा टाइम ऐसे मतलब टाइट पैक्ड अप जाता है? हम्म. नहीं यार, मेरे को तो सबसे अच्छी चीज यही लगती है. So whenever you get up in the हम्म. morning, you get up, the first thing you see is the sea, हम्म. and then I'm packing my bags and heading to the gym. तो वो हम्म. पूरा ड्राइव इज अक्रॉस द मीरामार बीच एंड Right, right, ऑन right. माय वे टू द And जिम, तो काफी just like रिफ्रेश for फील होता है. anyone who could, get help from this podcast, how do you like manage your day, since you have like 5 different verticals and you're managing like different agencies, and you can also sort of break down those structure, and then you can tell ki how are you managing so much of things, right? Yeah. Sure. Right, right, And this is a question I will ask right, right, right. you guys Sure. as well, because I love to know how people manage their days. So Hmm. I wake up at around 8, then straight away head to for a workout. So 1 डेढ़ घंटे की वर्कआउट करने के बाद come back, do my meditation. Depending on which meditation I'm doing, it could be 30 minutes or 45 minutes. And after that, I have my breakfast, plan, just check Hmm. my to do for the day, and then I start my deep work session. So first half is mostly for stuff that I need to really Hmm. focus on and get things done. Then second half is for calls. Mostly these calls are with different verticals. And I get an update on what's happening, what's not, if there's anything that needs my help. Otherwise, great. Then again, after the calls in the second half, I take a break at 6 p.m., where I usually either go for a swim or I go to the beach or just for a normal walk. And 7 p.m. I Hmm. come back and I start working on my second startup, Income. So that's when I have a team catch up with my Incommon team. Hmm. And then I work on Incommon and take US calls. So I usually end my work at around 10, 11, and then I read something, Can you elaborate and on then deep work, go because back इस to पे हमने go to पहले bed बात नहीं की, around but what 11:30, is 12. deep work sort of consolidated of? तो मेरे लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है डीप वर्क का, जो Hmm. बेसिकली Right. वर्किंग ऑन समथिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. Without Right. any distraction, matlab no notification, no calls, no emails, etc. But there's one thing that you're trying to solve, or one Hmm. thing that you're trying to do, Right. and you're doing And you it just pick up one with thing, right, at a complete time. focus. ऐसा होता That's है. it. Hmm. One or Right. two things depending on किस चीज को कितना टाइम लगता है, तो Hmm. वो संडे को मैं पहले ही कैलेंडर में डाल लेता हूँ. So Hmm. Sunday is the most important day for me in a week. Right. So Sunday is when I actually plan everything out for the Right. next week, and I put it in the calendar. ताकि जब वो टाइम आए तो देन आई एम नॉट Hmm. एम्बिगुअस, देन आई एम नॉट डिसाइडिंग कि अभी क्या करना है. आई ऑलरेडी नो कि, और वो एक माइंडसेट भी बन जाता Right. है कि Right. आज ये चीजें सॉल्व करनी है. तो आप जब जिम भी जा रहे You होते हो know. या Yeah. ड्राइव भी कर रहे हो, तो Right. आपको पता है कि आज ये चीज करना है, Right. तो ऑटोमेटिक थोड़े So थोड़े मतलब हम लोग कैसे करते आइडियाज हैं, ठीक आने है, मैं लग बताता जाते हूँ, है ना. We go in like a very sort of hodge podge हैं. kind of a space where मतलब so particularly for me, right, after this या Salil can also go about how he manages his day, etc. So we have like a core growth team, right, जिसके अंदर 5-6 बंदे हैं. We are always sort of hiring in the growth team, right, and we pass on all the work to different agency owners, and they would sort of be end-to-end owners of those things, right. We would just create the bridge between them and the client, right. So हमारा काम, like I do not structure my day because I am always in a very exploratory mode, right. I do not plan my day until and unless I go like at 11 a.m. I do not plan my day. ठीक है. 11 a.m. जाती ही दो सिंक होती है, उसके बाद आई जस्ट गो इन लाइक अ डीप एक्सप्लोरेशन मोड कि मैं और क्या कर सकता हूँ, राइट. आई यूजुअली रीड अबाउट सॉर्ट ऑफ लेट्स से वेब 3 के बारे में पढ़ रहा हूँ, राइट. फिनटेक स्टार्टअप्स पढ़ रहा हूँ, कोई भी उठा उठा के, राइट. और अगर कोई क्लाइंट कॉल आ गया बीच में तो उस पर चला गया. इफ समवन नीड्स हेल्प फ्रॉम मी आई वुड डू दैट, राइट. बट माय डे इज नॉट रियली स्ट्रक्चर्ड, राइट. आई एम वेरी एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, एंड मतलब ऑफिस में भी इफ देयर आर पीपल, राइट, दे वुड कॉल मी, आई वुड गो एंड टॉक टू देम अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट दे आर डूइंग, राइट. आई वुड जस्ट स्पेंड माय डे लाइक दैट. और मेरे को लगता है कि इफ आई एम इन ऑफिस, राइट, माई प्रोडक्टिविटी मैक्सेस आउट बिकॉज मैं पूरे टाइम किसी ना किसी से बातें कर रहा हूँ, ठीक है. एंड आई सॉर्ट ऑफ समिट अप इन माई वर्क लेटर इन द नाइट, राइट. आफ्टर 6 to 10 इज द टाइम व्हेन आई सॉर्ट ऑफ टेक ऑल द इनसाइट्स एंड ट्राई टू पुश inside my team and all of that, right.
फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी जस्ट वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू वीसी हाउसेज टू बेसिकली हेल्प देयर पोर्टफोलियो कंपनीज बिकॉज वी नो दैट वहां पे ना हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो हमको लगा कि व्हाई नॉट स्टार्ट दैट, Yeah. एंड आई थिंक आई ड्रैग्ड ऑफ सलील एट 3 PM एट द ऑफिस व्हेन ही वाज डूइंग सम डीप वर्क, ठीक है। मैंने कहा भाई नहीं नहीं, एक्सप्लोरेटरी आजा, ठीक है, लेट्स शिफ्ट टू रीचिंग आउट टू वीसीज, एंड नाउ वी आर इन अ स्प्रिंट वेयर वी आर रीचिंग आउट टू वीसीज एंड genuinely helping their portfolio companies to achieve things, right? तो मेरा मतलब is very exploratory in nature, right? Yeah. So I do this, and I go to bed at a very non-structured time, but I need to sort of start, solving for that. मैं उठता हूँ किसी भी टाइम पे, और मैं बस आई व्हाट आई डू इज लाइक आई गो फॉर एन आवर्स रन, जहाँ पे मैं नारियल पानी पी के 1 घंटे की रन करके एंड आई स्ट्रेट बैक टू ऑफिस, राइट? सो दैट्स हाउ माय डे इज लाइक, राइट, यूजुअली, Hmm. Hmm. honestly. Salil, तेरा क्या होता है? मतलब like I would like to know because I've observed you working like very closely, but I do not know how you plan out and stuff, Yeah. right? I think that I think I'm more of Piyush Bhai that are very structured in nature. Hmm. But my deep work usually happens when I'm walking alone in the evening, just casually going around, maybe cutting onions at home, cooking food for myself. I think for me, deep work is usually thinking a lot of stuff about work itself. जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आई थिंक सागर ने वी वर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स का पॉइंट, हाउ डू वी रीच आउट. And I remember पूरा evening I did not do any work, and suddenly कुछ I came up with some छोटा सा hack and we got all the parameters done. But usually पूरा time spent out on walking here and there, thinking कि कैसा हो सकता है. So that's my deep work. And usually मुझे लगता है कि I can't really sit down focus हर दिन. तो मेरा उसके लिए ना यूजली प्लान आउट ऑन कैलेंडर्स, तो कैलेंडर पे पूरा प्लान आउट रहता है कि वीक, अच्छा ये मॉर्निंग में ये है, ये इवनिंग में है, ये आफ्टरनून में. ऑल दो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता है, इवन सागर नोस कितना हे वाई रहता है मेरा प्रोग्राम. बट यूजली वीकेंड्स पे ये रहता है कि मेरा फोर्टनाइटली कैचअप हो खुद से. हाउ इज माई वीक, कैसे परफॉर्म किया, फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, किस ट्रेजेक्टरी पे आई एम गोइंग एट द एंड ऑफ द ईयर. तो वो यूजली रहता है ऐसा. But you cannot think of these parameters. मतलब I'm just asking a That question, is a great thing that you do. right? That's a great thing that you do, Sahil. See, the fortnight reflection you mentioned ना, वो बहुत बहुत critical है. And एक चीज बता रहा हूँ मैं. So I was मेरे को एक टाइम पे किसी ने एक चीज पूछी कि do you know how airplanes work? So like normal मतलब radar होता है, उस पे पायलट फ्लाइट को उड़ाता है. मतलब that was my response. Like कि जब एक फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है, Fixed. तो उसका Right. जो पाथ होता है वो चॉक्ड आउट होता है. पायलट का बस एक ही काम है, ये देखना कि फ्लाइट उस पाथ पे चल रही है. इस चीज को अपनी लाइफ But पे then how अप्लाई do you कर लो. become exploratory, Piyush bhai? मतलब I did चॉक that आउट योर like, but पाथ. I was bored doing that. मतलब I respect what you guys, both of you do, right? But I'm just trying to figure out कि मतलब if हाँ. you chalk out everything that's going to happen, right, you would miss like a lot of things that can happen, right? Would that not be the case, or you would have to balance it out, or you would only be exploratory? I don't know, right? एक्सप्लोरेशन का भी टाइम अच्छा, स्ट्रक्चर्ड right. होना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज आई हाँ. फंक्शन इन दैट वे. So for me, after work, after 10 p.m., it's all about exploration, reading random stuff or reading something that I'm curious about, reflecting on something. And weekend, I read more or I watch more stuff. So that's my time for being exploratory. But जैसे जैसे आप भी अपनी कंपनी ग्रो करोगे and you have so many things to manage, you will realize that you will have I to feel the become need to now, structured मतलब at आप जब कह least रहे हो ना, to तो some I level. actually feel the need to do that. पर मेरे Yeah. को होती है नीड, बट मैं फिर मतलब my mind is very balanced in a way कि मतलब मुझे पता है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इस चीज में मैं मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड हूँ कि मुझे पता है मुझे एक्सप्लोर करना है, राइट, और उसके अंदर ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है. एंड आई वाज लाइक यार आज भी स्ट्रक्चर्ड ही हो, एंड आई गॉट दैट मोमेंटम, मतलब मेरा मोमेंटम वो रुक ही नहीं रहा एक्सप्लोर करने वाला, राइट. आई एम जस्ट ऑलवेज ऑन दैट. सो हाउ डू आई लाइक टेक अ पॉज? कैसे करूँ यार मैं? शुड आई टेक अ ब्रेक एंड देन फिगर आउट हाउ टू डू दैट? तो मेरे साथ ही होता था ना भाई, whenever. So I was also in this mode in the initial part of my business career, but जब एक्सप्लोरेशन करते समय ना बैक ऑफ द माइंड कुछ काम रहता है हाँ 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 कि हाँ ये हाँ. 2-3 चीजें पेंडिंग है. Right, 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 right. तो वो You would not एक्सप्लोरेशन enjoy फुल फ्लेजेड exploring, नहीं हो right? पाता Because you था. have work always. हाँ मतलब कुछ तो है कि यार ये क्लाइंट का कॉल रिटर्न करना है, या ये डिलीवरेबल चेक करना है, या ये प्रपोजल सेंड करना है. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग And कि then यार explore. पहले लेट मी फिनिश माय वर्क फर्स्ट Right, right. एंड If देन given like something, right? गेट Because टू your एक्सप्लोरिंग. time is so structured as of now, सब कुछ एकदम cut to cut चल रहा है. If let's say you were given like one more agency, right?
to basically buy out or acquire. Would you be able to do that? Is like, huh? हाँ, Hmm. मतलब वो Okay. क्योंकि Like स्ट्रक्चर है where ना, तो does, उसको उसमें like फिट how do you करना manage इजी है. time? मतलब फिर ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब you are, मतलब I always feel कि मतलब am I focusing less on something and more on something, right? वो वाली चीज how do you balance out? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जो मैंने आई थिंक करण बजाज के वीडियो से Beautiful सीखा, content. एंड आई रियली एडमायर व्हाट दैट गाय हैज डन Hmm. in such a short amount of time. And the content that he Yeah. puts out is like unfiltered and very honest advice. तो he mentioned something कि जो आपके बिजनेस के सबसे इम्पोर्टेंट केपीआईज है ना, याद होनी चाहिए. वो आपको नींद में भी याद होनी चाहिए. तो Hmm. वो डैशबोर्ड ना आपको डेली देखना है. और वो जो मैं पायलट वाला एग्जांपल दे रहा था, वो इसी चीज में फिट होता है कि आपका गोल, आपका पाथ चॉक्ड आउट है इस साल का, और आप डेली बेसिस पर ट्रैक कर रहे हो वेदर यू आर ऑन But would you ट्रैक not और at sometimes feel like कि अगर मेरा path है to let's say do X, right? Do X, like it could be any metric, right? Successfully delivering X number of projects or successfully delivering X number of things, right? This X could या be Y as well. ये भी तो या लगता होगा कभी कभी बीच में. So do you like change that? Hmm. यार वो टेम्पटेशन रहता है, बट X minus. अगर एक्स प्लस समथिंग है तो Right. ठीक है. Right. 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 मतलब बट एक्स एक्स माइनस नहीं होना चाहिए. लाइक Right. आई एम हैप्पी इफ यू गेट टू एक्स. एक्स प्लस कुछ आता है, उसमें भी फिर इवेल्युएट करना जरूरी है कि वो जो प्लस वेरिएबल है उससे आपका जो वो ब्रेक नहीं प्रोसेस होना, है, जो हाँ मतलब, स्ट्रक्चर है, और वो या टीम में कितना इम्बैलेंस क्रिएट होगा. या अगर ट्रू ज्यादा, ट्रू हाँ, बिकॉज अगर दैट ज्यादा जीरो हो टू रहा है वन तो आई फिर गेस इट्स कि नॉट वर्थ वो इट. आपको ना, मतलब यू हैव टू प्लेस लाइक brick by brick until you sort of do the snowball effect, right? कभी कभी snowball कीचड़ में भी हो सकता है, right? कि मतलब snowball turns out like या into a massive mess because you have not sort of structured things properly, right? Hmm. और ऐसा हुआ भी है हमारे साथ. मतलब हमने Hmm. ग्रोथ के चक्कर में क्लाइंट्स ऐड किए हैं, और फिर उन क्लाइंट्स को ऐड Hmm. करने के चक्कर में रियलाइज हो कि इतना क्योस हो गया कि वो Hmm. जो इनिशियल एक्स था वही Right. हिल तो गया. yeah. तो ऐसी भी चीजें होती है. सो यू हैव टू बी वेरी Right, केयरफुल right. And that's why कि आप किस chalking चीज out को I think यस helps, बोलते right? हो. Because it lets you stay, or it's मतलब कोई बात नहीं यार, मतलब थोड़ा बहुत आप मिस कर रहे हो, right? It's Yeah. okay. But you still have like life at peace, right? That's what the agenda is. Hmm. मेरे मेंटर है मिस्टर अकील अहमद. Hmm. वो बोलते Hmm. हैं Hmm. Hmm. फोमो इज द Yeah. बिगेस्ट Yeah. एनिमी I feel so. Like all ह्यूमन the time. बीइंग. All the time. Yeah. But what I'm taking back from this conversation is कि मतलब one thing which I would take back, right? कि मतलब charted out होना चाहिए, chalked out होना चाहिए, and I would do that like after this, right? But anyhow, right? Like let's change the topic and get into something interesting, right? So Salil had this question. So when we were prepping, right, for the podcast, Salil is like कि यार पीयूष भाई का ना childhood पूछना कैसा है. मैंने कहा यार ये क्या है? फिर बोलता है नहीं नहीं, जब वो एजेंसी बना रहे होंगे ना अपनी ब्लू वेक्टर, एंड द थिंग्स ही वुड डू इन ब्लू वेक्टर, वो बहुत कुछ चाइल्डहुड से एसोसिएटेड होंगे. सो इज दैट सो, लाइक हैज दैट हैपेंड? डेफिनेटली यार, चाइल्डहुड का इम्पैक्ट तो रहता ही है. हम्म. बट मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा रहा है. हम्म. आई वाज इन अ मिडिल क्लास फैमिली. तो कभी ज़्यादा भी नहीं था, कभी कम भी नहीं था, और जो चाहिए था वो, अगर राइट राइट. ज़रूरत की चीज़ है तो वो मिल जाती थी. जॉइंट फैमिली. एंड वेरी लविंग फैमिली, एंड सब मेरे को कुछ फिगर आउट बहुत हो ही गया, पता है अच्छा. आपने जब कहा ना मतलब लविंग फैमिली और सब जॉइंट कुछ मिल फैमिली जाता था, थी. तो न्यूक्लियर की और बात नहीं हो रही वहां पे. लाइक आई गेट अ सेंस ऑफ कि जॉइंट है, मेरी भी हाँ, जॉइंट है, एंड मतलब ये भी हाँ, एक सिमिलैरिटी काफी कुछ भाई. तो क्या है, अपन कुंभ के मेले में पिछड़े थे क्या यार? राइट. सही है यार, लाइक बट एंड आई फील कि दिस mediocrity, right? कि तो मतलब when you do not have like a lot of things, and when you do not have like you can barely sort of eat all of those, आप अगर बीच वाले लेवल पे हो ना, that's I think the best stage to be in. Like I would agree that middle class families are the best, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब people who have like a lot, they would have like restriction to their choice because उनके घर वालों ने इतना कुछ कर दिया, they would have to sit on that, right? They cannot lose their legacy. और जिसके पास कुछ भी नहीं है, they would have to push like a lot, right? तो आई थिंक mediocrity is like the best stage to be in, right? मेरे को बहुत मजा आता एग्जैक्टली. है कि मतलब आई एम एट अ स्टेज वेर आई कैन एक्सपीरियंस बोथ द साइड्स, राइट? ऐसा नहीं है कि आई एम टू फार ऑफ फ्रॉम दैट और आई एम टू फार ऑफ फ्रॉम दैट, राइट? इट्स लाइक इंक्रीमेंटली एंड यू कैन रीच एनीवेयर. लाइक इफ यू इंक्रीमेंटली डिस्ट्रॉय योरसेल्फ यू कैन रीच द बॉटम, इफ यू इंक्रीमेंटली सॉर्ट ऑफ अपस्किल योरसेल्फ यू कैन रीच द टॉप, राइट? तो वाली चीज है.
तो मेरे साथ क्या हुआ कि so my father built a business from scratch, and he was able to provide us with all the means, all he took care of all our Right, needs. right, right. तो एक तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। तो जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और वो कॉस्मेटिक्स सेल करते थे, ही वाज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो वो खुद से ही सारा माल वाल खुद सप्लाई करते थे, तो Yeah, उनको my वो dad would हार्डवर्क pick up boxes and करते all, हुए right? You देख would, like, your काफी dad would अच्छा do it लगा। as well, देन right? ही Yeah, वाज एबल टू yeah. सेम, तो उनको देख के काफी इंस्पायरिंग लगता था। फिर उन्होंने जो चीज हमें जरूरत थी वो सब दिया, जो भी स्कूल कॉलेज, बेस्ट ऑफ स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट। तो मेरे को लगा कि यार अब मेरे पास Exactly, अगर exactly, रिस्क टेकिंग exactly. एपेटाइट नहीं हो तो Yeah, किसके पास होगा? मतलब इतनी अच्छी बैकिंग है। right, यहाँ लोग रहते right, जिनके पास कुछ नहीं होता और वो इतने बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। यहाँ right. तो मेरे पास मेरी डैड की इतनी अच्छी बैकिंग है, एंड ही इज Yeah, टेकिंग केयर ऑफ yeah. एवरीथिंग, सो आई हैव टू क्रिएट समथिंग Yeah, and you बिग। cannot shy away, तो right? वहां से Because वो your काफी dad has done मोटिवेशन something. आया। He has also started from somewhere, right? You cannot be like, "यार अब मैं इसको like I won't sort of take leverage of this." या मतलब why not, right? मतलब एक ही life है, time limited है, right? You have to sort of optimize for yourselves. Even like, and I have seen कि मतलब if you can do that, it solves for everyone in the ecosystem. सिर्फ आप नहीं benefit करते उससे. Like a man who has worked hard, right? And sort of you are lucky to be son or right. So you can create like value for a lot of people in the ecosystem, right? It's not only you. So that fact, right, is very एग्जैक्टली, satisfying in nature, right? Or since you also started like services business, right? So you understand कि zero in होना कितना मतलब बुरी बात है, right? You know, my dad always talks about our dinner table conversations were about this, right? कि यार zero in नहीं होना, right? Life में incrementally थोड़ा थोड़ा बढ़ना है, right? So right, that's why I think you chose services, right? Even गुड। I chose like a services business, and then we have like an aim to venture into a product or something, right? एब्सोल्युटली, मेरे को बस ये था कि यार कुछ, Hmm. मतलब मेरे को लगता है Hmm. जल्दी से कुछ बिजनेस शुरू करना है, मतलब आई नीड टू गेट I स्टार्टेड, agree. एंड सर्विसेज वाज द इजीएस्ट। हमेशा Yeah. ऑब्वियसली वो ड्रीम होता है कि यू बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड यू मेक इट रियली बिग एक्सेट्रा, बट Hmm. सर्विस इज इजी टू गेट इनटू Yeah. बिजनेस, और वो आपको बिजनेस के Yeah. बारे में काफी कुछ Yeah. I think मेरे लिए थोड़ा वैसा था, opposite journey थी. So personally, obviously being from a business family only, तो मुझे था कि यार मुझे भी पापा का business करना है, but my parents are like नहीं, business में नहीं जाना. So for them, corporate job was like a big thing. Hmm. But Yeah. और Yeah. अब उसके बाद 100%. कॉलेज सेम। के बाद सरकारी नौकरी became the big thing. अब now in being into business, even my father says कि risk appetite है taking. And जब whenever we talk about कि इतना revenue आया या ये client हुए, he brings that patience into me कि business है, it takes time, there'll be up and down, but he's got that mentality अभी से instilling in me कि risk Yeah. taking appetite होना चाहिए. Right. Predictable chaos is what my dad calls it. मतलब he's like कि होगा, ठीक है, chaos तो होगा, ठीक है, मतलब are you like man enough to deal with it, right? That's what he always tells me कि मतलब देख सब कुछ होगा, right? There will be lot of variables that will be uncontrollable, right? Do not worry, आराम से सो, ठीक है, कुछ नहीं होगा, अगले दिन सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने फेस किया, right? मतलब उनके पास मतलब there was, so as Piyush bhai, right, like your dad also was in inventory kind of a business where inventory was flowing. Salil bhai, like your dad was into which business? So या my initially was Siemens से start किया था, then we went Right. ventured into petrol pumps. राइट, इन्वेंट्री, राइट, बेसिकली Yeah. इन्वेंट्री। तो जब इन्वेंट्री मूव हो रही होती है, राइट, यू हैव टू मैनेज इन्वेंट्री, पे फॉर इन्वेंट्री, सेल इन्वेंट्री, तो उसमें बहुत सारे, एक इन्वेंट्री पे ही सब कुछ कंट्रोल है, राइट, कि वो नहीं मूव हुई तो फिर आपके लग गए, राइट। तो वो मेरे एग्जैक्टली, पापा ने चीज सिखाई है कि मतलब उनको मैंने देख के सीखी है कि जीरो इन नहीं होना और बहुत सेलेक्टेड चीजें पकड़नी है, उनको सेलेक्टेड तरीके से बेचना है, ऑल ऑफ दैट, राइट। So that is very ingrained. Even like doing services business, there is nothing to lose, right? And it's a good business to be in. I would also like with the through this podcast, right? I would like to sort of also branch out and tell everyone who is watching this कि अगर मतलब you are really good at what you do, right? Branch out in a services business. There is no harm, and you can always like fold your cards after 3 years or so. You would not fold, right? Once you get in, you would not fold. But even if you fold, right, you would get to a place where you can do something else, because services business में तीन चीज होती है, right? I feel there are three things. One is you make a solid team, right? You know exactly who to make wealth for, who to work with, etc. Second, you make like you learn businesses, right? Third, you explore different products, if different industries and all of that, right? मेरे को ये तीन चीजें बहुत advantageous लगती है, and it's much better off than doing, let's say, आप ट्रू। मतलब you're at a job which is boring, right? For the better word of it, right? It should be interesting. If not, then you can, their services business is like a great option to be in, right?
Yeah. और Hmm. कुछ चीजें और जो आप सर्विस बिजनेस सीखते हो, Right. बेसिक चीजें Right. बिजनेस में, जैसे टीम बिल्डिंग, Right. सेल्स, रेवेन्यू ग्रो करना, कैश फ्लो मैनेज करना इतना मतलब डिफिकल्ट Right. चीज है जो आप थोड़ा मिस्टेक करके ही सीखते हो। तो ये सारी चीजें आप सर्विस बिजनेस से सीख Right. जाते हो, उसके बाद आप Incrementally कुछ grow बड़ा करो, अटेम्प्ट right? करो। Like, और yeah. आई थिंक बट अभी, हाँ पीयूष भाई आप बोल रहे थे। और ये और मैं बस ये ऑन द चाइल्डहुड आई वाज जस्ट एडिंग दैट आई वाज वेरी थैंकफुल दैट आई वाजंट बॉर्न रिच, क्योंकि अगर मैं इफ आई Yeah. वाज बॉर्न रिच खुद तो की. मैं शायद क्या ही लेगेसी क्रिएट करता। Hmm. बट अभी Yeah. मेरे पास And it अपॉर्चुनिटी brings you है like in कि a, it meaningfully engages you, right? It कुछ ऐसा very करके meaningfully sort of, you have like things to do. You have like a या day planned out, right? You have like a beautiful team of people, you know, where you can work with them, etc. मतलब मैं office जाता हूँ, it's like a lot of banter in our office, right? So we're discussing marketing and we got like someone who is like a close friend of mine. She told us कि है ना ऐसे marketing करो कि ऑफिस के अंदर जो भी हो रहा है ना वो सब कुछ लिंक्डइन पे डालो। मैंने कहा वो सब नहीं डाल सकते हम लोग बहुत कुछ होता है भाई, है ना। सो लाइक इट्स फन टू बी इन अ प्लेस वेयर you genuinely enjoy work, right? Then being in a place where you cannot even ask like silly questions. I've seen cultures जहाँ पे मतलब एक बेकार क्वेश्चन पूछने की इतनी पनिशमेंट मिलती है, बट बैड क्वेश्चंस आर अप्रिशिएटेड, राइट? Those are the questions that make you to think about good questions, right? And good questions are what make you like a better individual, right? So this is like my digression of जब मतलब since the time I started this, right? So Salil, तू कुछ बोल रहा था, sorry. No, I was actually talking about कि जैसे हाँ we were talking about business building and all के बारे में, and being the competition is so high कि I think natural progression is the inverted T growth, where you try out a lot of stuff in your life, early stage business हो गया, marketing हो गया, sales, operations, whatever, and then branch out to into one, so that you have knowledge तुम when you're working maybe as a founder or as a co-founder, जैसे भी you're working, that you have literally design का knowledge है, tech का knowledge है, operations, then you can beat the competition. Then from different eyes you can really venture into okay, how the designer person is feeling about the pain points and all. So, and also coming to the work culture also, no? So usually I'll tell you, like Sagar was just talking about. So I usually क्या होता है, firstly I think I'm the late one to the office, ठीक है? And we've got such a fun culture कि one of our working colleagues है, and she's just come in new, and she's integrated so well कि like she opens up with everyone. मुझे हमेशा वो banter out करती कि oh finally you've come to the office time से आप. So ultimately, I think the three things नाइस। office culture में आता है for anyone, like personally for me would be growth, contribution and significance. If मुझे ये तीनों चीज feel हो रही है कहीं भी, I think it's a brilliant place to be in. Yeah, and fourth is banter, right? Because you would need that. Yeah, yeah, yeah. Banter is the बैंटर key, right? Like, yeah, बैंटर that इज द की। that is what keeps people engaged. And I think more of it, जैसे मतलब एक book में भी था, you do not call your team like family, you call it a team, right? Because there is camaraderie, as soldiers have and all of that. And once you sort of या go out with them, hang या out, like you go on like a good sports event or so, मतलब हमको अभी भी करना है, but those are the things you can only enjoy with the team, right? आपके फिर कलीग्स और दोस्त वो इतनी बातें बचती नहीं, बिकॉज यू आर टू engrossed into work, right? So you cannot be sad in work is what I'm saying, right? कि मतलब उसमें आप बोर नहीं हो सकते, right? फिर आपको like you have to open up, right? इंसान के लेवल पे. Yeah. एग्जैक्टली। पीयूष भाई आपके कैसे चलते हैं? Like how is like the usual banter in office? Tell us like some things that happen at Blue Hector. या Right, द right. इनिशियल फ्यू इयर्स वी वर वर्किंग आउट ऑफ अ बेसमेंट। एक बड़ा बेसमेंट था जहाँ 25 लोग की सीटिंग कैपेसिटी हाँ, थी। हाँ. एक साइड में क्रिकेट के लिए एक जगह था उसी बेसमेंट में, और एक साइड पे टेबल टेनिस का वो लगा हुआ था, हाँ. और उस पूरे एरिया में सब कुछ होता था। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फन Do you still वी recall that? हैड द इनिशियल 2-3 अच्छा, इयर्स। अच्छा. एंड वो प्रॉपर Right, वॉशरूम भी नहीं था हमारे ऑफिस right, में, मतलब वो एक जंगल सफारी के थ्रू जाना पड़ता था। right. बट वो सबसे अमेजिंग टाइम था। इतनी एनर्जी, मतलब 5 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 लोग टीटी खेल Right, रहे हैं, इधर कुछ लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक right, वो right, सबसे right, फन right. पीरियड है, That's where वही we are. आप लोग का आई थिंक स्टेज अभी चल रहा है, तो Yeah, we इसको won't like at one point we'll काफी इंजॉय recall करोगे and आप लोग। be like यार अब हम we are we cannot do this, right? वाली चीज आती है. We could do that, but you would वो not have पार्ट like सबसे time. You would be like मजेदार you're होता able है to hear my इस voice, जर्नी right? में। आ रही है ना? हाँ.
Piyush bhai, matlab, Yeah, like tell us no, generally yes. about stuff, right? Like what are the phases you have seen? Because I think most of the times when we have been in a conversation, आप कहते थे हाँ यार ये चीज पहले होती थी, right? मेरे साथ ही होता था. But what are the Hmm. things जो पहले होती थी we would not know Hmm. about, right? कि ये होता था अब ऐसे change हुआ. What are the things that have changed through the years, right? There one significant thing that I would like to say is Hmm. my pre-mentor and post-mentor phase. जब मैंने जॉब छोड़ा ईवाई का और ब्लू वेक्टर में शुरू किया तो काफ़ी रैंडमली चीज़ें चल रही थी और हम काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे थे, कुछ वर्कआउट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था. मेरे कुछ को फाउंडर्स थे मैंने जब शुरू किया तो वो सारे धीरे धीरे चले गए फॉर सम रीजन और द अदर. तो एक ऐसा पॉइंट आया वेयर वी हैड टू टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू वाइंड अप. Right. So that's when I met a mentor. Hmm. Name is Mr. Akil Ahmed. He's one of the founding team members at Rate Game. Hmm. And उसके बाद चीजें काफी चेंज Right. हो गई. And like what in what sense did Akil Ahmed sir helped you, So right? Like what are the things that he pinpointed कि यार ये आप गलत कर रहे हो, and this is how you should improve it, all of that. यार गलत से ज्यादा ना Hmm. उन्होंने पूरा होराइजन एक्सपैंड कर दिया. मतलब मैं अगर इतना सोच रहा था Hmm. तो ही Right. शोड मी कि इतना पोटेंशियल है, इतना कर सकते हो. तो फिर आपका वो Bro. Right. काफी Right. थिंकिंग काफी एक्सपैंड हो जाता है. उसके बाद आप माइक्रो चीजें बहुत इजीली कर पाते हो. तो वो की था. और दूसरा वैल्यूज कि किन वैल्यूज के साथ बिजनेस बिल्ड करना है वो Because that's how डिसाइड you करना बहुत find like जरूरी your है. co-founders and all of that, right? Like if the values are not aligned, right? दैट्स हाउ यू Right. या But दैट्स हाउ यू बिल्ड योर yeah. टीम. Right. तो ये दो की चीजें कि Hmm. पोटेंशियल बहुत है तो डोंट थिंक अबाउट जस्ट Right. दीज. एंड दूसरा की वैल्यूज What are generally the क्या values, right, which होने you guys follow बिजनेस at में टीम में. Blue Vector? वन थिंग ऑलवेज इज टीम फर्स्ट. मतलब ये आपको हमेशा याद रखना है कि योर टीम विल ऑलवेज बी देयर विथ यू. Right. क्लाइंट मे और मे नॉट. Right. सो ऑलवेज बैक योर टीम. एंड दैट हैज हेल्प्ड अस सो फार. मतलब जो बेसमेंट वाली स्टोरी में बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द Okay. पीपल हु आर देयर Okay. एट दैट टाइम आर स्टिल देयर. एंड वो Right. बॉन्ड्स अभी भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. उसके बीच में काफी लोग आए Right. और चले But गए. like the group you start with, right, that stays like very close knitted, right? And that's where the magic also happens, right? या या दैट्स व्हेयर द मैजिक आल्सो हैपेंस. और आप ये सोचो कि वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग लोग होने चाहिए और आपकी वाइब Right. मैच होनी Right. चाहिए क्योंकि बहुत उनके time साथ spend आपको करना काफी है. टाइम स्पेंड करना है. पर कितने Right. साल तक करना है वो भी नहीं I पता. think like even like you'd spend like more time तो with them than your counterparts, right? This is the hard truth, right? Right. Yeah. एग्जैक्टली So Salil bhai, like what do you feel? मतलब do you feel that energy in versatile or do you like कि नहीं हो रहा यार? Maybe I'll be very honest. So, it's something like this. I'll give तेरी my आवाज personal थोड़ी सी feeble हो गई, I think. experience. Yeah. Uh, is it okay now? No. अब अब सही आएगी शायद. Yeah. Yeah. Perfect. But I'll give you like my personal experience वो versatile way. I think personally मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है. देख मेरा जो बैकग्राउंड था थोड़ा इन स्पेस इंजीनियरिंग का था, फिर थोड़ा यूपीएससी का था. एंड देन सागर आई न्यू थोड़ा आईसेक्स से, बट वी नेवर वर्कड क्लोजली एवर. ठीक है, हाई हेलो टाइप था हमारा. And then I ended up meeting Darshan with Sagar and Jagan. And inka background is from Sensible. And when you were talking about the value system, Sagar and I had like a very good person one-to-one talk when he was explaining about the value system and all. And यहाँ से you were saying the same thing of the how important is the value system. मतलब मुझे ना काफी एक कंफर्मेशन बायस हो रहा है मुझे अभी कि हाउ इम्पोर्टेंट टीम कम्स फर्स्ट एंड देन वैल्यूज साथ आती हैं. क्योंकि एक जो वैल्यू अंदर जनरेट होती है ना, इट्स लाइक चाइल्डहुड. जो बच्चे को सिखाया जाता है वो बड़े होकर वो वही वैसे ही करता है. जो वैल्यूज रहेंगी, अगर डिसिप्लिन सिखाया जाएगा he or she will be disciplined throughout the life. Similarly, it's me. I've personally learning insight when he talks about saying no to work, when he talks about team's comfort, when he talks about it's okay to take a break and have an off day.
lot of small things, मतलब वैसे कोई बड़ी चीजें नहीं, very small things that brings together a team. I think काफी brilliant है. Right, yeah, like true. Yeah, पीयूष भाई बताओ. एब्सोल्युटली. और जो आपने बोला ना सागर कि सलवा ऐसे तो नहीं लगा कि नहीं Yeah, हो रहा, ये right, लग रहा है तो मतलब right, right, सही right. है, I always मतलब have this आप question. ग्रो करो. Yeah, I always have this question, यार. ये हमेशा लगते रहना चाहिए Exactly. और मतलब ये कि होता अब है ना नहीं हो कि पा रहा. you should not, मतलब आपने जो कहा ना कि टीम कम्स फर्स्ट, आई यूजुअली सॉर्ट ऑफ हैव दिस कल्चर कि सबको बोलना पड़ता है कि भाई अब काम करना बंद करो, ठीक है. एंड आई लाइक यार टेक ब्रेक्स नाउ, राइट? लाइक यू शुड टेक ब्रेक्स, यू शुड हाँ, स्लीप प्रॉपर्ली, यू शुड नॉट सॉर्ट ऑफ हाँ. बी हेल्ड अप इन वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बिकॉज इट विल हैपन, राइट? इट विल हैपन somehow or the other, right? You'll get like newer people and all of that, but if you burn out, then you're not doing good to yourself, right? तो वो एक चीज है which we really push. And Piyush bhai, so starting out, right? Why is the tagline stupidly ambitious? Yeah, how did it come about? All of that. Is there a story to it? डेफिनेटली. Hmm. जो हमारी कोर टीम थी, Okay. किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, Right. ना एडवर्टाइजिंग में ना बिजनेस में, Right. एंड स्टिल वी वर वेरी एम्बिशियस. वी वांटेड टू वर्क विद ग्रेट ब्रांड्स, डू सम Right. ग्रेट वर्क, ग्रो द कंपनी, ऑल ऑफ दैट. तो इससे Right. एक ही Right. चीज निकल के आती थी, दैट वी आर This has स्टूपिडली worked, right? एम्बिशियस. मतलब Right. Right. कुछ, Nice. या. And so, how happy are, like, how do you feel the culture is currently? How the vibe is inside Blue Vector, right? मतलब आप जब team member से बात करते हो, is it like how would you describe your vibe? Is it like energetic? Is it like very peaceful? Like, because your energy is very this thing, right? You're poised, you're very peaceful, all of that. Or do we only see this version of Piyush Kedia? Hmm. नहीं, so I'm usually like this only, but yeah, the team has obviously a lot of energy क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट Right. रहता है कि अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी वो प्रोजेक्ट चल रहा है. बट हाँ, जो लॉकडाउन के पहले Right. और जो अभी है उसमें थोड़ा डिफरेंस तो है ही, बिकॉज ऑनलाइन आप कितना ही वो कर सकते हो, बट अभी जब चीजें खुल रही हैं तो वी ट्राई टू गेट द टीम टू अच्छा, गोवा. गोवा में? तो अभी भी 3-4 लोग आए थे, अच्छा. एंड आई कैन फील द सेम वाइब, सेम एनर्जी. तो मैं ऐसे धीरे धीरे लोगों Right. को बुला बुला के Right. कन्विंस कर रहा हूँ कि यार गोवा शिफ्ट हो जाओ सबको. सबको कर लो. ये मेरा एजेंडा है इस साल का, Yeah. मैक्सिमम लोगों को गोवा शिफ्ट. हाँ. तो हाँ, तो एनर्जी वाइज अच्छा. और एक चीज जो हमने शिफ्ट किया था थोड़े टाइम पहले ना, Hmm. so when we started we were working like any other agency, working non-stop, weekend ये वो. Hmm. Then Right. one day we decided कि we don't want to be that agency. We want to Hmm. be an agency which works Monday to Friday, office hours, no work on weekends, enjoy life, Hmm. enjoy work, and lead a balanced life. तो ये चीज मैं भी काफी स्ट्रांगली बट कहीं ना एडवोकेट कहीं करता हूँ, बाउंड्री और अब ये डाली होगी पूरी ना आपने, टीम में भी है. मतलब you'd have put boundaries, मतलब right? अगर अभी कोई अगर, हाँ, Hmm. बाउंड्री डालना पड़ा, क्लाइंट्स को थोड़ा पुश बैक करना पड़ा, नए क्लाइंट्स को बताना पड़ा. जैसे भी रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगा, एक बहुत बड़ा लीड आया, बिग रिटेलर, एंड ही वाज लाइक यार, एंड वी वर सपोज टू डू द सोशल मीडिया, एंड ही वाज लाइक यार सोशल मीडिया तो काफी एक्टिविटी संडे सैटरडे को होता है, तो द टीम हैज टू बी ऑन स्टैंड बाय एंड अवेलेबल ऑन द वीकेंड. सो आई सेड नो, मतलब ये तो राइट. पॉसिबल नहीं होगा, राइट. मतलब बहुत मुश्किल से इधर तक आए हैं, राइट. अभी वापस जाना तो पॉसिबल ही नहीं है. And I told him कि we work with bigger brands than yourself. We work with Volvo Cars India, and they work in such a organized way. Everything is done planned weeks in advance. तो उस तरह से काम कर सकते हैं. Yeah. But you're not going to Yeah. compromise To on say no these is like very things important at anymore. this stage, right? I think, मतलब फिर तो क्या ही मतलब है, right? Definitely. And yeah. well, आप creative business में हो. Anything that disturbs the team's balance will Yeah, but I've seen like degrade the bigger quality of agencies, your right, work. not even able to abide by this. I think this has to be a conscious shift from the leadership team कि यार ये होना ही चाहिए, right? I've seen like bigger Absolutely. agencies, मतलब you'd know the Absolutely. name as well, right? Social media spaces में, right? And these guys like push like boundaries and are like यार करो, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा, right? You're only looking at the client, right? उससे आपकी टीम तो ब्रेक हो रही है. एंड आई हैव सीन लाइक अट्रिशन एट लाइक मैसिव लेवल्स, और फिर वो बाद में जाके उनके लिए प्रॉब्लम होता है, राइट? ड्रॉप लाइक कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट? इट्स ओके टू डू दैट, राइट? थोड़ा पैसा नहीं आएगा, दैट्स इट, राइट? आगे जाके वापस रीस्टैक हो जाएगा. इनफैक्ट मेरे को तो एजेंसीज, स्पेशली क्यों? बड़े एजेंसी से लोग हायर करने में थोड़ा डर लगता है
क्योंकि वो उस प्रेशर और उस माइंडसेट से आते हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ये माइंडसेट यहाँ या वापस नहीं आ जाए। और फिर कई लोग अच्छा, जहाँ जब यहाँ आते हैं तो बहुत बोलते चिल्ड हैं यार आउट ये है, तो अलग ही राइट? है कुछ, मतलब राइट, 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 यहाँ तो बहुत शांति है, काफी nice. चिल्ड आउट And है। how do you like hire people? Like, is it like, matlab not like how you source people and all of that, but what do you look in people? हम्म, Hmm. बहुत ही सिंपल है। Hmm. You know your team, you know their vibe, you need to check whether this person will fit Hmm. Right. in this team and this vibe। ये टीम का डायनामिक्स और आपकी टीम का डायनामिक्स अलग होगा, सबकी टीम का डायनामिक्स अलग होगा। Fit हो आपको रहा है बस कि ये नहीं? देखना कि ये Right, right, कैंडिडेट right, right. इसमें फिट होगा कि नहीं। In the Hmm. past, we've tried hiring senior people from Hmm. Hmm. bigger agencies, etc. Like you It's should never have worked these out. values aligned. मतलब in like an hour of conversation we have figured कि यार मतलब काफी similar सा वो है, right? Like काफी similar सा mindset है where you know like a lot of values aligned, right? So that's how even you would go about and choose agencies to work with, right? जैसे content, I think Content Ninja, right? Am I pronouncing it right? है ना? Content Ninja and a couple of other agencies you have sort Yeah, of acquired. मतलब I think वहाँ पे सबसे ज्यादा yeah. एक टसल आती हुई वहाँ पे it would need like a little bit more time, you know, to acquire and work with them, etc. So वहाँ पे how do you do it? Like, is there a process started out of acquiring, or is it like? So I knew Shreya for a Hmm. long time. So she is from my college. She was a year junior to me. और उन्होंने अपनी एजेंसी एक साल बाद शुरू की. So I was Hmm. like a senior to her in college and a Right. senior to her in the agency Right. business as well. So you are always in touch. So I used to Hmm. keep telling her Hmm. कि यार Hmm. ये Hmm. प्रॉब्लम्स हमने अभी सॉल्व की, ये देख लेना, ये नहीं हो। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आया when we discussed कि यार जब हम Right. Right. सब Right. कुछ Right. इतना And what do क्लोजली you कर help ही रहे them हैं तो with? Like, साथ ही is में it कर like लेते हैं। acquisition or what? So so initially it was more about just Hmm. something that my mentor had done to me, expand the horizon, think big। जो हमारे systems processes थे वो pass Hmm. on कर दिए ताकि Right. उनको वो चीज़ों का कोई टेंशन नहीं लेना है। Right. They can just focus on growing। और जो भी Right. हमारे Right. लिए वर्क कर Right. रही है Right. वो Right. उनको बता दिया। That's it। बाकी Right. तो वो दोनों खुद ही इतने अमेजिंग है, श्रेया मायंक। उन्होंने उसके बाद Yeah. And I think दे डन teams में भी ट्रेमेंडस like there ग्रोथ would be a lot of इन द लास्ट cross-cultural 2-3 years। knowledge exchange and all of that, right? That would make sense. Yeah. अब जैसे जो 5 वर्टिकल्स भी हैं ब्लू वेक्टर Hmm. में, दे ऑल हैव स्लाइटली डिफरेंट कल्चर्स Hmm. एंड इट trickles down from the vertical head। So my job is to They are make at sure that same. the vertical head or the leader that I'm choosing, Hmm. they fit the vibe of the company and Right, 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 right. they Piyush follow the bhai, same like, do you values। have any questions for us? Matlab, it's an open conversation. You can also ask us questions, all of that. So how did you Like, guys get into the okay, so agency I'll give you like a detailed business? sort of, you know, but by the way, like, I would want to, you know, thank you for being like the first guest when we do not have a YouTube channel and all of that. Abhi to YouTube channel banane humko at this point in time, right? I just have like my podcast channel where this clip is going to go. But you know, we have like processes set up, so we would do that. So thank you for doing this, right? More than like, you know, No worries। like a, you know, counter agency owner, I would say that, you know, matlab, for me you are like a friend now, right? I would even call you up like at any point in time, etc. Not on Saturday, Sunday Of course। specifically, but after that. So I think Yes। वो vibe है. And yeah, so okay, I'll tell you how did we start, right? So I was doing a job and you know, problem ये थी कि positioning में I felt कि यार product ना कोई भी सही से नहीं बना रहा, right? Like, you know, when people are doing products in agencies, they are just thinking tech, or they are just thinking design, or just thinking product, right? So these three things have to come together, right? And for me it was like, यार इसमें ना marketing, मतलब I feel कि I used to do marketing, right? And I am not like a creative person to the core, right? Mahima is like other people are, but you know, it was a lot of friction for me to do marketing because like I'm genuinely not creative, right? So मतलब मेरे को ऐसा लगता है everyone is creative, but I'm a little bit, I do not have like that इतना knack for marketing, right? Though my previous roles are in marketing, product growth, all of that. So I picked like product and growth from my previous roles, and I was like, yeah, let's do something around this, right? And we just capped our vision कि हमको ये है कि we need to think big, but एक point पे ना हम लोग को 40 क्लाइंट से ज़्यादा चाहिए ही नहीं, ठीक है? 30 to 40 क्लाइंट्स, और इस बिजनेस में ना
वी कैन सॉर्ट ऑफ रिपीट क्लाइंट्स. मतलब डेव और डिजाइन में दोनों में ऐसा होता है, डेटा के बेसिस पे चेंज होती रहती है चीजें, फीचर बढ़ते आते, राइट. एंड वी ओनली वांट टू वर्क विद सक्सेसफुल कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में है, राइट. तो उसमें क्या होगा ना, दे वुड गेट लाइक अ ब्यूटीफुल टीम, राइट. We would be able to work for them and we would have like a cap in number, right, कि इतनी एजेंसीज के बाद काम नहीं करना, और हमारी जो टीम होगी 40 के हिसाब से, it would only be 30-35 people, right. It's not a very humongous task to manage those. In this process I would explore like a lot of products. In this process I would explore like good developers, good designers, and जब ये एक कैप हिट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं पक्का ब्रांच आउट करके प्रोडक्ट बनाऊंगा, राइट. So my vision is just to achieve that cap. एक retainer हो जाए, and then probably one of us would maintain this business, and we would someone of us would go and chart out into products. This would be like our small VC fund, right? एक level पे. So we want to provide value through to a limited set of startups in product, and then start. This would be like our VC fund to sort of experiment with different products, right? तो ये horizon मतलब हाँ और सबसे अमेजिंग हाँ हाँ चीज हाँ ये होगी, आप इतना कुछ सीख चुके right. होगे इतने सारे लोगों का प्रोडक्ट्स बना के, Right, मतलब right, यू right. वुड बी That's लर्निंग true. एट एन Yeah. एक्सपेंस ऑफ मतलब समबडी बहुत एल्स. amazing products है. Like I So, would even sort of call them out. So एक बंदा है, like he's in my office, right, Pradeep, and this guy is like fantastic at what he does, right. He does, being the parent is the name of his startup, right. This guy is solving for pregnant mothers का community, right. I'm in the meetings where I could understand कि ना oh, ये launch nice. कैसे कर रहे हैं, right, pregnant mothers के को प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, राइट, हाउ दे आर रीचिंग टू 1000 customers, 10,000 customers, ऑल ऑफ दैट, राइट. So I'm sitting with these people and understanding. एक like we recently got like a query. This person is making Airbnb for dogs in Luxembourg. मेरा पहला थॉट था कि यार यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, वहाँ पे अपन कुत्तों के लिए Airbnb बना रहे हैं, राइट. तो it was like a very nice idea, right? Fantastic idea, right? That's such a Yeah, yeah. fantastic idea though. It's such a Exactly. big problem. Somebody has to Exactly, go exactly. और somewhere. मेरे को वो चीज Where do they रियलाइज नहीं leave हुई their until and dogs? unless I sort of thought about it, right? Yeah. So I'm able to explore different markets, different products, and then even find out कि कौन सा product कौन से market में fit करेगा. My day job is to only talk to clients and figure that out. So it's like an amazing journey where I know कि इसके आगे सर्विस नहीं करना, but इसके आगे product करना है, और product की learning ऐसे आ जाएगी, right? From this business, and this business would be like a smaller, let's say 1 to 2 million kind of a business, जहाँ पे मतलब उसके आगे फिर product होगा, right? So that's like the mindset. Yeah. And Exactly. that will give you enough Exactly. cash to even bootstrap Yeah. your company. And by then we would have like solid To- product. हाँ. सलील And बहुत देर से Salil चुप bhai, बैठा है, what's वैसे your चुप नहीं बैठता वो. absolutely? Yeah. Salil bhai, what's your vision like? ये Where do feels you a want to very, get I think, deep question है. the next To be honest, few years? I don't know right now where I'm heading in life. मतलब मेरा कोई ऐसा goal नहीं है कि probably 10 years, 15 years I see myself here. What I usually do is I just see whatever steps that I'm taking. Let's say my core role is as a growth person right now in the growth team. How is this growth position helping me grow as a person, and when I'm growing as a person मेरी vision कैसे expand हो रही है. So fundamentally as a growth person problem solving ability आ रही है, and how अगर problem solving ability आ रही है I can use the same skill set to apply anywhere in life. अगर ये skill set आ गया I can integrate with the other kind of niches in life as well. So I take life this way, and then I divide this into like थोड़ा डिफरेंट वर्टिकल्स, जैसे वर्क स्फीयर हो गया, स्पोर्ट्स स्फीयर, रिक्रिएशन फन हो गया, फाइनेंसेस हो गए. तो इंटीग्रेशन करके हाउ एज अ पर्सन ह्यूमन बीइंग हाउ एम आई ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन आउट ऑफ माई सेल्फ. तो अल्टीमेटली आई थिंक ये आई प्रॉब्ली 2 months डाउन द लाइन पहले आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस क्वेश्चन, हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो वो आंसर करना है मुझे. तो यूजली आई थिंक मेरा इंस्टा के ना हैंडल पे भी आई माई सेल्फ अ क्वेश्चन. तो मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, तो इट्स जस्ट एक्सप्लोरेटरी फेज. तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंचूंगा, तो इट्स लाइक दैट. Nice. और आप लोग काम के अलावा क्या करते हो? मतलब What do you अभी guys तो do in your honestly free time? like we do not have like free time, like life is like out of way. मतलब अभी तो time नहीं मिल रहा, but I would like to have like a Yeah. structure in place. अभी तो honestly like we are not finding time. मतलब most of my time is looking at Salil, Abhishek, all of these guys, right, and their time always goes like that. Like I think we are borderline एक level पे ऐसा हो गया कि space चाहिए, right? Honestly तो वो चल रहा है. Yeah. अभी अभी हाँ जी. नहीं, क्या कह रहे थे आप? सलील आपके लिए? हाँ. मेरे लिए पोस्ट वर्क लाइफ मैं पहला तो आपके यही लिए? होता है कि सागर से कैसे हटूं मैं, बिकॉज हम ऊपर नीचे ही रहते हैं.
हम भी एक ही बिल्डिंग में हैं यार, यही प्रॉब्लम है। बट या ऑन द अदर हैंड तो Nice. यूजुअली ना मेरा ये रहता है आपकी तरह, बुक्स, सैटरडे संडे स्पेंड टाइम बुक्स रीडिंग, प्रॉब्ली अभी आई एम फिगरिंग आउट हाउ डू आई स्टार्ट माय न्यूज़लेटर अगेन एंड कंटेंट क्रिएशन गेम अगेन, तो वो फिगर आउट करने का रहता है। तो मोस्टली मेरा ये रहता है कि अगर मैं ऑफ वर्क रहूँ ना, टू फाइंड आउट कि यार और क्या इंटरेस्ट है, तो आई कीप नोटिंग डाउन। जैसे आजकल स्विमिंग का एक आया है इंटरेस्ट नया। दूसरा प्रॉब्ली द अदर डे आई वाज स्पीकिंग टू सागर, यार कभी कैन वी बाय एन आईपीएल टीम कभी जिंदगी में, लाइक इतना पैसा हुआ, थिंकिंग थिंकिंग डिफरेंट स्टफ। Yeah, Fantastic. Yeah. but could you buy, like, what's the answer? वो तो टाइम ही बताएगा। सही है। टाइम क्यों बताएगा, लाइक सोच लिया तो I think we कर three लेगा। can get together and get Darshan भाई and other people also along, तो पक्का एक टीम इकट्ठी कर लेंगे। तो हम टीम नहीं बन जाएंगे? हाँ, क्या हमारी सेम एक टीम सोचते बन हैं भाई, जाएगी। क्या ही लेवल पे सेम सोचते हैं। बट यार, नाइस, लाइक, एंड Piyush bhai, I have like one question for you. So, okay, how do you end up managing work life, personal life? Because, Sagar and मेरे भी personally ऐसी sphere आने वाला है in future. So, what do you think about that? किसने कहा मेरा आने वाला है? खुद की बात करना। नहीं तो अपना पूछना है यार, आई तो थिंक सबका ही आएगा कभी ना सबका ही कभी। आएगा। तो मैं ना इसको भी बहुत ही जो सेम प्रिंसिपल मैं बिजनेस में लगाता हूँ, मैंने वो सिमिलर प्रिंसिपल शादी में भी लगाया। ठीक है, हम्म तो जब आप एक को फाउंडर लाते हो कंपनी में, तो क्या चीजें देखते हो कि आपकी वाइब मैच हो रही है कि नहीं, आप लोग दोनों जब साथ में आओगे तो ग्रोथ 1+1 3 होगा कि नहीं, आपके स्किल सेट्स कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, मजा आएगा कि मजा नहीं? आएगा कि नहीं साथ में काम करके। तो यही सारी फिल्टर्स आप अपने पार्टनर के लिए भी लगाओ, हम्म और इसको ना एक पार्टनरशिप की तरह देखो। हम्म मतलब इट्स अ पार्टनरशिप वेयर यू गाइज विल हेल्प ईच अदर आउट। उनके कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे, आपके कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे, दोनों मिला के कंबाइंड यू गाइज आर अ बिगर फोर्स। और राइट अपने जो राइट। ऑब्जेक्टिव्स है ना लाइफ के, वो अलाइन करो। द गोल द हैज टू बी गोल हैव अलाइंड, टू बी राइट? अलाइन। तो फिर ना वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वाला वो चीज रहता रहता नहीं है है। नहीं ना। मतलब उनको भी पता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आई एम वर्किंग फॉर दिस गोल राइट एंड आई एम राइट रीचिंग राइट। आउट टू हर फॉर दिस हेल्प फॉर दिस रीजन। तो वही होता है ना, जब टीम, राइट। जैसे आप टीम में करते हो, जब आपको टीम या को फाउंडर्स को पता है कंपनी का गोल ये है, तो सब फिर उसके लिए मिलके काम करते हैं। तो वैसे लाइफ के लिए भी वैसे ही कर लो, तो बहुत इजी हो घसड़ नहीं जाता होती है मतलब उस चीज में। मैनेज करने के लिए। या राइट राइट राइट। और मैंने सेम चीज, एग्जैक्टली सेम स्निपेट, राइट, जो आपने बोला, तो सलील को एक दिन पहले बताया। मैंने तेरे को बोला था ना सलील, उस दिन हम वॉक कर रहे थे ऑफिस से, कि गोल सिमिलर होने हाँ, चाहिए, राइट, ऑल ऑफ दोस और थिंग्स। दोनों अलाइन होने चाहिए, मतलब गोल्स दोनों के अलग होने चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि या उनके ये गोल्स है और आप इस तरह उनको सपोर्ट कर सकते हो, और उनको पता होना चाहिए राइट। कि मेरे ये गोल्स हैं और वो इस तरह मेरे को यहाँ हेल्प चाहिए। तो अगर उस तरह से आप देखोगे ना, एक इक्वल पार्टनरशिप टाइप, तो बहुत बढ़िया चलता है और बहुत मजा भी आता है। मजा आता है, हाँ, करेक्ट बात है, सही बात इनफैक्ट है। मेरा तो एक एजेंडा है सलील, अभी अब तो क्या? लाइफ का, कि गोवा को अच्छा, इंडिया का क्रिएटिव कैपिटल बनाना है। नाइस जैसे नाइस, हो सकता है ना? हाँ, मतलब सब कुछ है फॉर इट टू बिकम द क्रिएटिव कैपिटल। तो जैसे हम हम्म टेक हब बोलते हैं बैंगलोर को, तो क्रिएटिव हब कौन सा है इंडिया का? वो गोवा होना चाहिए। यहाँ पे शायद क्रिएटिविटी लोग ना इतना वो नहीं करते, मतलब दे वुड जस्ट बी लाइक खुश टेक हब से, राइट, कि मतलब ये आ गया, इतना फोकस नहीं करते। अब बट रिकग्नाइज कर दीज रहे हैं, स्पेसेस, राइट, कंटेंट की वैल्यू राइट, अब अब कर समझ में रहे आ हैं। रही है सारी कंपनी को। हाँ 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 हाँ, राइट, इट्स अ इट्स सेइंग बिकमिंग एक्सपेंसिव टू एवरी बिल्ड लाइक गुड कंटेंट। एवरी कंपनी इज गोइंग टू बिकम अ कंटेंट कंपनी, ऐसा बोलते हैं। तो हम्म वो टैलेंट चाहिए। पेपर टाइप डॉट ए, एग्जैक्टली। या In और in वो टैलेंट इंडिया में ट्रू ट्रू, काफी है। in fact, Deloitte का या एक स्टडी था, I believe मैं गलत नहीं बोल रहा, Deloitte का ही था, उसमें creativity was in the top 3 in coming next 5 years. या सो टॉप टू क्या थे? दो up to याद नहीं, empathy था एक, पता नहीं तीसरा क्या था, so they basically talking about अच्छा, such skills. राइट, नॉट श्योर हाँ, इफ आई पीयूष ने कहा डिस्कस्ड होगा। माय सेकंड वेंचर विद यू गाइस लास्ट टाइम। So I'm working on नो। another idea, and actually this is where we can collaborate also on. So it's called In Common, हम्म and the idea is to help international companies hire creative talent in India. राइट राइट। Very आई simple हैव सीन model. इट ऑन योर लिंक्डइन, Yeah. आई हैव सीन इट ऑन योर लिंक्डइन। आई थॉट कि मतलब उसके बाद यू स्टार्टेड ब्लू वेक्टर, नहीं? वो I think बस 1-2 month ही हुआ है, तो just ओके। kind of shaping up the idea, trying out a few things, हम्म and we already seeing a lot हम्म of potential.
There is. If you would want, you can check out Flexible for Yeah, that matter, right? flexible को तो Like so they do Flexibly, it right? for developers, freelancers. Right, they do it for We are developers. helping Correct. companies hire full time folks. Right. तो पहले हम हायर करवाते हैं, फिर उनको गोवा शिफ्ट करवा देते हैं. तो क्या पिच है भाई, क्या पिच है ये, बस लगा दो इन कॉमन के, इतना सा वीडियो लगा दो, लोग ऐसे आएंगे भाई. और सही. काफी अच्छा जंप भी मिल जाता है. तो जो डिजाइनर और कंटेंट राइटर, लेट्स से इफ इज मेकिंग $1,000 with an Indian company, his counterpart is getting $5,000 in the US. हम बीच में हायर करवाते हैं. So the company is paying 2,500. They are saving. This guy is getting a 3-4x jump. तो इससे इनकी And क्वालिटी it's ऑफ a good लाइफ business. बढ़ जाएगी, तो इनको गोवा शिफ्ट करने में आसान होगा. मेरा अल्टीमेट एजेंडा यही है. इन कॉमन की टैगलाइन ही होनी चाहिए, Get hired getting and move people to to Goa. Goa. Right. I think It's a good tagline. probably versatile को ना पूरा मूव वहीं करा देंगे फिर. अरे डेफिनेटली. Yeah. But we can talk about it, right, Salil? मतलब let's say जगन और दर्शन अगर ready है, तो we could also Actually काफी possible It's a good idea. है, हाँ. Because अभी और अगर आप इसे स्ट्रक्चर कर लो ना, every 2 weeks or every month you guys can make a visit to Bangalore, meet all your clients, etc., and then come back. this is a good strategy, Piyush bhai. Like you are asking us to do something which is not And possible. इधर एक स्टार्टअप हम है, नहीं कर पाएंगे move. हाँ. उनका स्टार्टअप का आइडिया है कि हम बिजनेसेस को गोवा शिफ्ट करवाते हैं. They help them find accommodation, co-working space, everything. They sort हाँ you हाँ out. हाँ 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 हाँ. You were telling this last time, है ना? तो मैं But how is like the rental and all? कैसा है? देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है कंपेयर टू नॉर्मल सिटीज एक्सेट्रा, बट जब गोवा आओगे एंड इफ यू पे द सेम रेंट एज यू पेइंग इन बैंगलोर और दिल्ली, यू गेट अ वेरी नाइस हाउस. तो अपग्रेड हो जाता है सारी चीजें. Right. And you can get like a seaside Yeah. and all of that. You open your windows, see the beach दिख रहा है. I Definitely. personally have, so Sagar and I, Piyush bhai, we were talking about घर के बारे में a week ago. ठीक है. Now I have a bias towards Piyush bhai कि I'll take a house in Goa now. Yeah, same. मतलब पहले तो मेरा मनाली साइड का प्लान था कि मतलब शिफ्ट, लाइक व्हाई नॉट हैव लाइक एन ऑफिस इन, इंटरनेट आता है, बढ़िया हाइक्स है, मोमोज बहुत अच्छे हैं, राइट, एवरीथिंग इज नाइस, राइट, व्हाई नॉट मूव टू मनाली एंड सेटल देयर. तो इफ एवरीवन इज रेडी, व्हाई नॉट. पर गोवा के साथ ये है ना सागर भाई कि इट हैज एवरीथिंग टू ऑफर दैट अ सिटी कैन. मतलब यू वोंट मिस एनीथिंग. यू वोंट मिस द फास्ट लाइफस्टाइल. एग्जैक्टली, वो चाहिए तो वो भी मिलेगा, एंड यू हैव ऑल द अदर ऑप्शंस एज वेल. मेरा एक ही वो है, मतलब लाइक माय ओनली बिटर पॉइंट अबाउट गोवा इज कि गर्मी बहुत है यार. Like, ऐसा मेरे I को cannot लगता tolerate था, heat. नहीं है, पर मेरे को अभी तक तो नहीं लगा. इट्स अप्रैल, इतनी गर्मी नहीं लगी. मेरे को गर्मी नहीं लगी अभी तक. सो इट्स अप्रैल 30th अच्छा. and I go out every evening for a walk and it is pleasant. दिन में थोड़ी गर्मी होती है, but compared to where I was गुड़गांव, उससे तो कम ही है. गुड़गांव यार, मेरी पूरी लाइफ जयपुर में निकल गई. मेरे दोस्त मुझे बोलते थे पानी है तेरे पास. मेरी पूरी लाइफ यार निकल गई यार. लाइक आई डू नॉट वांट टू स्टे इन अ प्लेस दैट इज heated. और काफी बारिश हो जाती है. मतलब अभी पूरी आई थिंक काफी हीट वेव चल रहा है, बट गोवा में ऐसा कोई इम्पैक्ट मेरे को ज्यादा दिखा नहीं. Right. Nice speaking to you, Piyush bhai. Any ending notes? Anything like anything, right? गोवा आ जाओ. कूलर लेके आ जाता हूँ. यहाँ कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट हाँ, Nice. अगर बिजनेस के लिए बोलूँ तो अगर एज वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, फोकस ऑन डूइंग लेस वर्क बट हाई वैल्यू. इससे यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट great people and you will enjoy working with them and on the projects that you guys take up. But how do I tweak? मतलब अभी तो पूरा वैसा खराब सा चल रहा है ना. मतलब वो चेंज लाना, it's like a bit difficult, but I think it will happen slowly if you intend. Yes, वो intent बहुत strong रखना. Start saying no to stuff which will just kind of build on your current system and start looking out for those high value projects. Right. True, Piyush bhai. I think that's it. We would end it here, and thank you so much, Piyush bhai. Thank you so Salil much. bhai. It was fun. Yeah. And we'll catch up soon. Cool. In person. 100%, 100%, bro. 100%. Okay. Yes. चलो भाई. Bye.